Okay, guys, so welcome to the fifth lecture, okay, of order block. एंड यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं. आई होप इससे पहले वाला जो वीडियो था, जो इसमें मैंने इलस्ट्रेशन में एग्जांपल समझाया था, उससे आपको समझ में आ गया होगा, एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा कि किसको हम लोग हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं. ओके, नाउ वी गोइंग टू सी सम एग्जांपल ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो और आप मतलब लाइव चार्ट में लाइव मतलब मार्केट में जाके थोड़ा बैक टेस्ट करके डेटा कलेक्ट करके यू कैन अंडरस्टैंड कि यस दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक. ओके, एंड अगेन वन थिंग आई वांट टू से कि ये जो अभी हम लोग डेली और वीकली में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इट ऑल्सो अप्लाइज ऑन 4 आवर 1 आवर 15 मिनट ऑल्सो. ओके, बट द रीजन आई एम टेलिंग यू गाइस कि डेली और वीकली में अभी सिर्फ ध्यान दो, बिकॉज इन फ्यूचर when we going to look for entry model na, we need higher time frame direction, right? We need higher time frame direction. And what will be our higher time frame direction that time? उस टाइम हम लोग हायर टाइम फ्रेम डेली और वीकली का पर्सपेक्टिव यूज करेंगे कि किस साइड डेली इज गोइंग टू प्रिंट, किस साइड वीकली इज गोइंग टू प्रिंट. ओके, अगर if we understand where daily and weekly is going, we can frame trade, right? If we understand weekly is going to be bullish because we are at weekly fair value gap, bullish fair value gap, then we can look for the long setup and we can avoid short setup, right? We can avoid sell setup because we understand we are at weekly bullish fair value gap, so we have to look for the long, right? Vice versa for the sell. That's why I'm telling you guys, just right now stick with daily, weekly, and in future, of course, we will build more in this thing. Basically daily weekly के अंदर we will go on 4 hour 1 hour time frame, but right now just stick with daily and weekly. Okay, so let's see some example quickly here. Okay, and just give me 1 second. Okay, so here you can see, for example, we have this bullish fair value gap, right? You can see bullish fair value gap here. Okay, so let's see what is high probability order block. Where high probability order block forms? High probability order block forms inside the fair value gap. So we have fair value gap here, right? So let's see, we going to form order block or not. Okay, so you can see we tap this fair value gap. Okay, we tap this fair value gap. Now here you can see we have two down close candle, two down close candle, right? So we have two consecutive down close candle. If we, first of all, in last video we discussed we can have consecutive down close candle or one down close candle also. Okay, we can have three consecutive down close candle as well. Okay, so यहाँ पे हम लोग का दो consecutive down close candle है. So अगर इसको ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक बनना है तो क्या होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक? So you can see the first candle. So we're going to take first candle, right? As we discussed on the last video. So ये first candle का opening price क्या है? Opening price ये है, right? This is the opening price. So let's extend this out. Okay. So we tap this fair value gap. अगर upcoming candle हम लोग upside जाते हैं और ये जो हम लोग ओपनिंग प्राइस मार्क किए हैं, सेंसिटिव एरिया जो मार्क किया गया, कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, देन वी विल से दिस हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, जो ये लास्ट टू डाउन क्लोज कैंडल है, राइट? अगर कैंडल क्लोज नहीं होता है अपसाइड तो वी विल नॉट से हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक. ओके, सो हियर यू कैन सी नेक्स्ट कैंडल. क्या लगता है कैंडल क्लोज हुआ है इसके ऊपर कि नहीं? हुआ है, राइट? यू हैव टू सी बॉडी नॉट द विक. अगर सिर्फ मान लो विक ऊपर रहता और बॉडी नीचे क्लोज होता तो हम लोग फिर उसको कंसीडर नहीं करते. वी वांट टू सी बॉडी क्लोजिंग अबव दिस opening price of this down close candle. Okay, so this is our bullish order block right now. Okay, so let's quickly type this bullish order block, right? So we have this bullish order block. So this down close candle is our order block basically. Okay, this down close candle is our order block. Okay, let's mark different color. Let's mark orange. Okay, and one more thing I want to touch in this class. Okay, हम लोग
जो ये कैंडल मार्क कर रहे हैं, ओके, जैसे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम लोग मार्क किए, ये ऑरेंज शेडेड बॉक्स है, तो हम लोग बॉडी टू बॉडी मार्क करेंगे हमेशा, ठीक है, बॉडी टू बॉडी, ओके। एंड हम लोग नहीं चाहेंगे, जैसे हम लोग याद है फेयर वैल्यू गैप में हम लोग 50% मार्क करते थे, जैसे इसका 50%, फॉर एग्जांपल लेट्स से 50% ये है, ओके, दिस ऑफ 50%। सो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक में भी 50% लेवल मार्क करेंगे। वाई वी मार्क 50% लेवल, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में ना हम लोग नहीं चाहते हैं कि मार्केट जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो 50% के नीचे क्लोज हो। व्हाट आई मीन, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू। सो जैसे मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक है हम लोग का, ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हम लोग का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसका हम लोग ना 50% लेवल मार्क कर लेंगे। आइदर यू कैन ड्रॉ रेक्टेंगल, ओके, जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ फॉर एग्जांपल, ओके, ये जो ऑरेंज शेड बॉक्स है, तो यू कैन ड्रॉ रेक्टेंगल बॉक्स एंड वही आप मिडिल लाइन में जाके 50% मार्क कर सकते हो, ओके। बट ऑलवेज डू दिस ऑन बॉडी टू बॉडी, ओके, यू डोंट हैव टू मार्क विक। जैसे यहाँ पे यू कैन सी, लेट्स ज़ूम हियर यू कैन सी आई हैव, जो मैंने ये ऑरेंज शेडेड बॉक्स बनाया है, ये मैं बॉडी टू बॉडी लिया हूँ, राइट, एंड इसका 50% मार्क कर सकते हो, ओके। 50% इसलिए हम लोग मार्क कर रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक का, बिकॉज तो फिर अपकमिंग कैंडल जो होगा ना, वी डोंट वांट टू सी अ क्लोजर बिलो द 50% ऑफ दिस ऑर्डर ब्लॉक। अगर 50% के नीचे क्लोज हो रहा है ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल, अगर क्लोज हो गया, ओके, बॉडी अगर क्लोज हुआ है, बॉडी, अगेन आई एम सेइंग बॉडी नॉट विक, अगर लेट्स से जो नेक्स्ट डेली कैंडल है अगर वो इसके नीचे क्लोज होता है, ओके, तो देन दैट्स शोइंग अ साइन कि ये ऑर्डर ब्लॉक होल्ड ना करे, ओके। अगेन आई एम सेइंग बॉडी नॉट विक, बिकॉज विक डू द डैमेज, ओके। So you can see we have this bullish order block. Okay, so you can definitely take trade directly at this opening of the order block. You anticipate कि next जो कैंडल क्लोज होगा या जो उसके अगले कैंडल क्लोज होगा वो मतलब ट्रेड करे डाउन साइड, ओके, टैप करे हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक एंड देन कंटिन्यू करे प्राइस हायर। वी कैन डिप लिटिल बिट लोअर, बट again, it's a probability game, but this is high probability order block for us. Our stop will go below this low. Okay, our stop will go below this low, and then we anticipting कि market continue करे push करना high. Okay, so let's see क्या हुआ है next candle. Let me delete this. You can see next candle how market wick. Okay, it respected the 50% of this order block. Okay, 50% respect किया, and you can see how it expanded higher. इससे आप लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे हम लोग का ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ कि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। सो अब जो नेक्स्ट कैंडल जो होगा अगर वो टच करता है ओपनिंग प्राइस, देन फिर हम लोग 1 आवर पे जाके 4 आवर 15 मिनट पे जाके हम लोग फिर एंट्री देख सकते हैं, बुलिश एंट्री देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये हाई प्रायोरिटी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो वी हैव टू लुक फॉर द बुलिश सेटअप, राइट। एंड यू कैन सी हाउ नेक्स्ट कैंडल प्रिंटेड वेरी स्ट्रांगली अपसाइड, ओके, और अपकमिंग कैंडल। So definitely you can go to 1 hour and then you can frame your setup on 1 hour basically, okay। वो हम लोग एंट्री डिस्कस करेंगे, बट अभी बस आप कंसेप्ट समझो, ठीक है। Okay, so let's see another example. Here you can see we have this fair value gap, okay, bullish fair value gap, and this is our right now down close candle, okay, this is our down close candle, but अभी तक हम लोग ये टैप नहीं किए, ये fair value gap टैप नहीं किए। So if we tap this fair value gap, okay, if we tap this fair value gap in next candle and then we close above this opening price, okay, then we close above this opening price, then this is going to be our valid bullish order block, right? So let's see. So you can see next candle wick, we tap this fair value gap, okay, and yes, definitely ये जो कैंडल ये काफी नीचे तक wick किया है, but always remember body tells the story, wick is always do damage, okay। so अगर body close हुआ है ये fair value gap के अंदर या ऊपर, ये fair value gap जो हम लोग का है यहाँ पे, you can see ये ऊपर close हुआ है, right, definitely wick किया है डाउन साइड, बट जो कैंडल का क्लोजर है ये ऊपर हुआ है। so this fair value gap is still valid for us, okay। अब अगर ये कैंडल में तो हम लोग इसके ऊपर क्लोज नहीं हुए, राइट, ये कैंडल में तो इसके ऊपर क्लोज हुए नहीं है, तो अभी तक ये जो डाउन क्लोज कैंडल ये हम लोग का हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक तो बना नहीं है, वी नीड क्लोजर अबव दिस हाई, राइट। सो लेट्स सी क्या यहाँ पे हम लोग क्लोज किए हैं इसके ऊपर, ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नहीं किए हैं, राइट। डेफिनेटली वी कमिंग फ्रॉम द फेयर वैल्यू गैप, ओके, वी टैप दिस फेयर वैल्यू गैप, ओके, बट ये क्लोज नहीं हुआ, ये सिर्फ विक किया है,
और जैसे कि मैं बोला कि विक डू द डैमेज, बॉडी टेल्स यू द स्टोरी। अगर इसका कैंडल बॉडी अगर क्लोज होता है इसके ऊपर, देन हम लोग के लिए फिर ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। यू कैन सी जस्ट विक क्या है। सो दिस इज, अभी तक हम लोग का ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं फॉर्म हुआ है। ओके, लेट्स सी अपकमिंग कैंडल। यू कैन सी अगेन ऑन नेक्स्ट कैंडल ऑल्सो, जो ये नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ वो भी क्लोज नहीं हुआ है इसके ऊपर। सो स्टिल वी डोंट हैव दिस ऑर्डर ब्लॉक। ओके, एंड यू कैन सी वी बेसिकली हम लोग क्लोज ही नहीं किए उसके ऊपर। सो नाउ वी विल अवॉइड दिस। ओके, क्योंकि काफी कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। लेट्स सी सम मोर example here. You can see we have this fair value gap, right? We have this fair value gap, right? So in this candle we tap our this fair value gap, right? Bullish fair value gap. So now to make this valid bullish order block, okay, to make this valid order block, we want to see closer above this opening price, right? We want to see closer above this opening price. So let's see. You can see in the next candle the body closed above the opening price of this. So this is our bullish OB, right? So this is our bullish order block basically. Okay, so this is our bullish order block. So now what we are intercepting कि next candle open हो और या उसके next candle open हो, मार्केट ट्रेड करे लोअर, हम लोग का ये फेयर वैल्यू गैप सॉरी ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टैप करे, रेस्पेक्ट करे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को, एंड देन फिर कंटिन्यू करे ट्रेड करना हायर। ओके, सो जैसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप में याद है कैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि ये डेली बुलिश फेयर वैल्यू गैप टैप करेगा तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं हायर। तो यही चीज हम लोग ऑर्डर ब्लॉक में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक हो। ओके, we tap this order block. Okay, let's see how it moved. In next candle we tap the opening price of this order block, and you can see how we expanded on the next day. Okay, and again we will mark the 50% level of this order block. Okay, so ये मैं फिबोनाची यूज कर रहा हूँ। यू कैन यूज दिस बॉक्स ऑल्सो, रेक्टेंगल बॉक्स आप यूज कर सकते हो, बॉडी टू बॉडी मार्क करके मिडिल लाइन यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज दिस फिबोनाची ऑल्सो। सो मैं टेम्पलेट सेट कर लिया हूँ। यू कैन से 0, 1 और 0.5 है, तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट सेव एज टेम्पलेट करूँगा तो ये टेम्पलेट बन जाएगा इस टाइप का। 50%, जैसे मैं फिबोनाची में क्लिक करूंगा तो पूरा फिबोनाची नंबर आ जाएगा, राइट? सो you can do that. Okay, so it's totally on you. So we will mark this 50% of the order block, and we don't want to see ki candle close below the 50% of this order block. Okay, so let's see how it continue. Can you see how it again traded and tapped the 50% of this order block, bullish order block जो हम लोग का है? Okay, because this is coming from the fair value gap, right? You can see how it respected this candle, इसके नीचे close नहीं हुआ, सिर्फ wick किया है, and you can see body जो है यहाँ पे close हुआ है, and you can see again few days it continue moved higher and higher. Okay, I want to show you one more bullish example, then we will see some bearish example as well. You can see we have this bullish fair value gap, right? So we have created this bullish fair value gap, first candle, second candle, third candle. So we have this bullish fair value gap, right? So अभी तक हम लोग ये fair value gap tap नहीं किए. So we want to see market tap this fair value gap and then फिर candle close हो इसके ऊपर basically, right? So let's see. Let me delete this and let's mark this opening. Okay, to make this valid order block. So let's see. So you can see next candle we tap this fair value gap, and you can see we definitely wicked lower below the fair value gap, but the body is still respecting, body is still closing inside the fair value gap. Okay, and अभी तक हम लोग इसके ऊपर क्लोज नहीं हुए, right? You can see we have this wick but not a candle closure. We want to see candle close above this opening price of the first candle basically. Okay, so on the third candle also we have not closed above this opening price, right, of the first candle. So we have now this three consecutive down close candle, right? And you can see on the next candle we expanded higher, and you can see we closed above this opening price. So this is now our valid order block, right? We have this valid order block. Why this is valid order block? We tapped the fair value gap. Okay, we respected the fair value gap, and the candle closing above the first candle of first candle high के first candle of opening price के ऊपर close हो रहा है, right? You can see the closing here somewhere, right?
So this is our order block, and you can see we have this three consecutive down close candle. So we can mark the 50% of this whole three consecutive down close candle. So we will take from the opening of this to the last candle body basically. Okay, and you can mark this. Okay, so this middle line is our 50%. So let's turn on the level. So this is the 50%. Okay, middle line. Now what we're looking for market to trade lower. Okay, next candle we want to see कि market come lower, or maybe next to next candle we want to see if market come and tap this order block, then we can expect a bullish move to the upside, right? And once we tap this order block, we can look for the long setup. Now you don't have to look for the sell setup. Okay, you don't have to look for the sell setup. Let's say we closed here. Okay, now you thinking market will come down, so we can take sell setup because it is going to move lower to tap this order block. Don't do that. That's a counter trend, okay? And that's not what I am teaching. I am teaching you guys, you have to wait. You have to literally sit. You have to wait maybe next day, upcoming days. If market will tap this order block, then you will look for the long, but you will not look for sell because of the retracement, okay? So let's see. You can see next candle. You can easily look for the long at this area. Okay, you can see how it tapped the order block, but you can see the 50% level didn't broke. Basically it respected the 50% and candle still closing above here. Okay, if you go to 1 hour time frame, okay, and if you go to 1 hour time frame, let's see can we find some entry or not. Okay, definitely we trade it lower. Okay, we will talk, maybe is going to be too much for you guys on nothing on 1 hour. Currently on 15 minute, you can see we have this fair value gap to frame an entry. Okay, 50% fair value gap for the entry, and you can see how it continued higher. Okay, so definitely not teaching you right now entry, but just giving you guys a concept. Okay, and you can see how it traded higher and higher. Definitely you can easily take advantage of this upside move basically. Okay, and you can see still body respecting 50% of this order block. Okay, so I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा कि what is high priority order block. Currently I'm not going to show you various order block क्योंकि already 20 मिनट का वीडियो हो चुका है. So I want from you guys mark this type of order block at least 30 to 40. Okay, and show me. Okay, on next video I'll show you guys various order block also. So I hope you guys understood the concept or what makes high priority order block. Just mark it and send me. On next video I'll show you various order block example as well.